breaking update that we are getting, where there are protests that are continuing in different parts of Jammu and Kashmir. As the pictures there on your screens, we are also looking at pictures coming in from Anantnag. There are also attempts being made. Yes, we are getting live ground updates. लेकिन लगातार वो वापस मारे जा रही है. देखिए, टीयर गैस कैनिस्टर भी मारे जा रहे हैं पुलिस की तरफ से. टीयर गैस शेलिंग हो रही है. अभी अगर हम बात करें तो लगातार वापस टीयर गैस शेल मारे जा रहे हैं पुलिस पे. आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है लगातार, आप देख सकते हैं स्टन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से. देखिए मैं अपने कैमरे से जूम करके आपको दिखाएं कि कैसे स्टन ग्रेनेड्स जो है फिलहाल दागे जा रहे हैं ताकि इनको यहां से भगाया जा सके. और देखिए फिलहाल टीयर गैस शेलिंग हुई है और itself is also right in the midst of the protest that is taking place now. This time it seems that the protests have gone a little bit violent, where the police there had to resort to different measures there to disperse the crowd, and tear gas shells that are being fired there, stone pelting reports that have also come across. Absolutely. And tear gas canisters, stun grenades are being hurled. The precise reason was that they wanted to move towards the airport road. जो पुलिस को नहीं आगे जाने दे रहे थे, एयरपोर्ट रोड पे ये धरना देना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने टीयर गैस का प्रयोग किया, स्टन ग्रेनेड्स का प्रयोग किया और इनको भगाने की लगातार जो है कोशिश जारी है. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर थी. CRPF हो, Jammu Kashmir police ho, all were deployed since morning to make sure they don't march ahead. But now police has stopped them and hurled tear gas grenades. And आप देख सकते हैं कि लगातार जो है टीयर गैस शेल लगाए गए. CRPF, Jammu Kashmir police, all of them together trying to make sure that traffic does not stop or come to a grinding halt on the other side of the road. लगातार जो है अभी पुलिस अब ये देख रही है कि कैसे इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ पे रोका जाए और इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए. और लगातार जो है पुलिस फिलहाल देखिए आगे बढ़कर उनसे बात करने की भी कोशिश जारी है ताकि उनको यहाँ रोका जाए और यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए. महराज, Ishan, where are the protesters headed now? If you can speak to a few of those people, because what is being said that they wanted to protest in front of the LG office. Over to you. Well, right now they are back at the position where they were sitting since yesterday, asking the government for assurance, asking them to shift these employees back to Jammu. And now they try to march towards the Srinagar airport, but police fired tear gas shells and also stun grenades. Lathi charge was done in order to push them back. Now they're back at that place, still raising slogans against administration, police and security forces for not allowing them to move towards airport road. What precisely could be the reason is that the airport road is very sensitive and they did not want that to get blocked. One has to see for the police to give out a statement why really they were stopped from marching towards that side. But they are right now angry, trying to talk to police, trying to tell them that why they were stopped, asking them questions and asking them to really what really happened, that why there's confrontation. You can see, I'll ask my camera person to show you that police and these Kashmiri Pandits trying to talk, trying to negotiate, asking them why was the reason that they opened tear smoke shell. But police tried to stop them at several occasions, asked them not to go ahead, but they did not listen. CRPF, Jammu and Kashmir police then swung into action, opened tear smoke shells at them, and now I have some of these Kashmiri Pandits. Sir, this is one of the most pathetic situations. What I have observed keenly in past 30 years, government has totally failed in rehabilitating us, at the same time in providing security. अगर government हम लोगों को यहाँ पे सेफ्टी नहीं दे सकती, हम लोगों को वेपन दे दीजिए, हम अपनी सेफ्टी खुद कर लेंगे.
वो भी नहीं कर सकती तो हम लोगों को जम्मू भेज दीजिए, कम से कम हमारे माँ बाप तिल तिल नहीं मरेंगे। उनको मरने पे मत इतना हमें प्रेशराइज मत करो कि ये एक ग्लोबल एजेंडा बन जाए। वी आर अ वेरी पीसफुल कम्युनिटी, वी हैव ऑलवेज मेंटेन हार्मनी, बट नाउ दे आर फोर्सिंग अस टू डू ऑल द पैथेटिक थिंग्स विच वी आर नॉट। हम पे आज स्टोन मेल्टिंग हुआ, मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या आज तक कभी सुना है कि पंडित ने पत्थर उठाया होगा? कभी नहीं, आज भी नहीं हुआ। और इन लोगों ने हम पे आज टीयर गैस शेलिंग की। फिर कितना शेमफुल है सर, ये कितना शेमफुल है। तो आपकी क्या क्या डिमांड्स है सरकार से? सर डिमांड सिर्फ इतनी है, जो राहुल भट्ट शहीद हुए अभी, उनकी फैमिली, उनको एक सिक्योर माहौल दिया जाए, उनकी वाइफ को ड्यूटी जॉब दी जाए, उसके बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर की जाए। एट द सेम टाइम यहाँ पे 6000 एम्प्लॉइज हैं जिनके पास एकोमोडेशन नहीं है। एक तो उनको पहले सिक्योर एरिया में डाला जाए, सेकंड उनको वेपन दिया जाए ताकि वो अपनी सेफ्टी खुद की कर पाए। थर्ड ये है कि हम लोगों को अगर ये सब चीजें नहीं हो सकती तो हमें कृपया करके जम्मू वापस शिफ्ट कर दीजिए, हम वहाँ खुश रहेंगे। यहाँ हम सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। हर साल एक एक इंसान को हम नहीं खो सकते। So as not scapegoat. So as you heard them, they are very angry that to why is the government making them a scapegoat by trying to resettle them under PM's package. Police men trying to speak to Jammu and Kashmir, to these protesters, angry protesters, asking them to stay back and not to talk. They are trying to have a conversation with them to why really they opened tear gas at them and to why were the from going towards the airport road. Since yesterday, Divisional Commissioner Kashmir, IGP, SSPs, DIGs tried to visit, pacify them, promising them that there will be concrete action taken. But despite that, they did not listen. They said that their demands are not only to take the PM package migrant employees to Jammu, but also to provide safety and security to them, and try to make sure that every time there has been killings of Kashmiri Pandits, that should stop. But despite that, we have seen in Kashmir that targeted killings have taken place, and that is what has angered them today. And as I said earlier, that this is for the first time we saw in central Kashmir, North Kashmir, and also in Budgam, there were protests, simultaneous protests by the Kashmiri Pandit community who live in these colonies. There's a colony just adjacent to this road where these Kashmiri Pandits reside. The colonies were constructed by the UPA too, and then job packages were also provided to resettle them. But now, since there have been targeted attacks, they say that they don't want to stay here anymore. These package people should be taken back to Jammu. But remember, this will definitely be a big blow to the government's promises of resettling Kashmiri Pandits, because now they are demanding that they want their jobs to be taken back, relocated to Jammu, because the government has been continuously eyeing, claiming and saying that they are trying to make sure that the Kashmiri Pandits are resettled in Kashmir, they are brought back to Kashmir. And now, since the demand is that all those people who have been resettled under PM's package be moved to Jammu, this will be a big blow to the government's promises and the words that they have been giving, and assurances they have been giving to the Kashmiri Pandits that they need to stay here. They will provide them jobs, safety and security. But since yesterday, as I said earlier, they have been sitting on this road. This road has been completely blocked, and nobody is being moved to allowed to move from this road. But when they tried to march towards the Srinagar airport road, they were blocked. Initially yesterday, their program was to move towards LG House, protest outside LG's residence. They were demanding yesterday that LG should reach out to them and assure them and listen to their grievances, but that didn't happen. We're told that Lieutenant Governor is in Sopore, North Kashmir today, but will he visit these protesting Kashmiri Pandits will be still a question and something that the government needs to answer. But it seems like the protests won't die down, because they have come back to their original place to protest against killing of Rahul Bhat. Remember also that it's a big question mark on the security also, because given the fact that militants come in, they barge inside the office of this particular person and shoot him there inside that particular office is something which will worry security agencies. And it is at a location which is a very busy marketplace. Police is generally deployed around Chadoora for maintaining law and order, and that is when we saw that they used the exit route, the last side of the road, to go out from that particular location. Okay. We'll try to speak to some people here, who are very angry about the situation. Sir, हमने आज देखा कि लाठीचार्ज किया गया, टेयर गैस चलाया गया. आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ? ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जेकेपी ने ऐसा किया. उनसे वो अनफॉर्चुनेटली जो
डिस्ट्रिक्ट बडगाम की पुलिस है उनकी तरफ से टीयर गैस लाठीचार्ज हमारे ऊपर किया गया। हालांकि पीसफुल आप भी देख रहे थे, हमने कोई पत्थर नहीं उठाया, कोई गलत बात नहीं की। इन्होंने लेडीज को इंजर्ड कर दिया। 4 लेडीज इंजर्ड हैं, 4 एब्सकॉन्डिंग, हमें पता नहीं बंदे कहाँ हैं। अभी पता चला कि इनको डिटेन किया गया। हमें ये बोले कि ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम निहत्तों के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो सरकार का प्लान था कि कश्मीरी पंडित्स को, हिंदूज को वापस ला कर It has totally failed. It is totally failure of the government. गवर्नमेंट ने किसी भी एक बंदे को सिक्योर नहीं किया है। आप खुद देख सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस में एक बंदा जाके हमारे भाई को शहीद करता है, तो बताइए किस टाइप की सिक्योरिटी है। ये आपसे भी जानना चाहेंगे। बेसिकली सर, आई एम स्टेट सेक्रेटरी स्पोक्स पर्सन ऑफ जॉइंट नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो छोड़ के हमें डिमांडें 4 हैं। जब तक ऑनरेबल गवर्नर साहब यहाँ नहीं आते, ये प्रोटेस्ट यहाँ से हिलने वाला नहीं। और हमारे 4 आदमी इन्होंने बंद किए खानों का। किस बात पर जेके पुल ने बंद किया? या तो इनकी गवर्नमेंट की चाल है, इनको बंद करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। ये देखिए हाल, और इसका हाल देखिए, इसके बच्चों का हाल। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारे डिमांडें हैं वो डिमांडें फुलफिल की जाए। हमने डिमांडें क्या मांगी है? हमें सिक्योरिटी दिया जाए, या नहीं तो अदरवाइज हम डिजिग्नेशन देंगे सारे और जम्मू भागेंगे। या तो हमें 4 बंदे हमें वापस चाहिए। हम पीसफुली यहाँ पर बैठे हैं, अमन से बैठे हैं। हमने कोई लाठी नहीं बरसाए, कोई पत्थर नहीं उठाया। हम उन पसंद लोग हैं, आराम से बैठने वाले लोग हैं और इंसाफ मांगते हैं। इस आदमी जो मारा गया, इसको 1 करोड़ रुपया चाहिए, और इसकी जो बेवा है उसको नौकरी दी है वो जम्मू में। और जो बाकी हमारी है जो मुलाजिम लोग हैं, हाँ जो मुलाजिम लोग हैं, ये चाहते हैं हम, अगर यही हाल रहा, हम यहाँ से मास माइग्रेशन करके ये क्वार्टर छोड़ेंगे, वहाँ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट LG साहब यहाँ आते हैं, हमें आश्वासन लिख के देंगे हमने कर रखा है, ये रास्ता से हम यहाँ से हम हिलने वाले नहीं। और ऐसे बताइए, जॉइंट के पुलिस ने हमारे ऊपर क्यों जाती की? जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की चाल नहीं है, ये क्यों ले लिया? क्या हमने कौन सा पत्थर मारा? हमने कौन सी गोली मारी? हम पीसफुली बैठे हैं, रात से रोते हैं, हम अमन पर। कि सरकार कहीं ना कहीं जो दावे कर रही है कि कश्मीरी पंडित्स को रीसेटल किया जाए, सरकार हमें टारगेट कर रही है अपना वोट बैंक बनाने के लिए। कश्मीरी पंडितों को इस्तेमाल करके हमें इस्तेमाल कर रही है। अदरवाइज हमने किया क्या? हम काम करते हैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ, हर भाइयों हम इकट्ठे रहते बैठे हैं। हमारे हमसाया चाय पानी सब लाया, उनके साथ मिले जुले हैं। आप जोड़िए एक बार फिर से